तो फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हम कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, लेट्स गो फॉर दैट। क्या दिया है यहाँ पे? A glass slab is subjected to the pressure of 10 atmosphere. Okay. So this is the pressure of 10 atmosphere. अब ये डिले नहीं हो रहा, this is fine now. 10 atmosphere, but 1 atmospheric pressure is 10 raised to 5, so this will become 10 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस, बी बोलिए या फिर इसको के बोलिए, के बल्क मॉड्यूलस, या बी या के भी बोलते हैं कई बार इसे, 37 into 10 raised to 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैं स्पीड में लिख पा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे से कर रहा है। चलिए, देन द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज, मतलब डेल्टा वी पूछा है। फ्रैक्शन मतलब डेल्टा वी अपॉन वी। इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दिस इज बी, बल्क मॉड्यूलस बोलिए, या के, which is equal to v into delta p upon delta v, या तो फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, डेल्टा v अपॉन v। वेल मुझे चाहिए यहाँ पे डेल्टा v अपॉन v, so this will become delta v upon v, that is the fractional change, is delta p upon v. So delta p is 10 raised to 6 और 10 into या फिर 100 into 10 raised to 4 लिखिए, divided by the bulk modulus is 37 into 10 raised to 9, तो कुल मिलाकर बनेगा 100 अपॉन 37 into 10 raised to -5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 3 approximately, 12 8 96, 40 3 40 3 अब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, सो दिस डेल्टा वी अपॉन वी, द फ्रैक्शनल चेंज, इज इक्वल टू 3 दूने 6, 2 डाले 23, 3 से 33, 2 बचा ना, 23 24 पकड़िए, 24 to 24, approximately 2.7 or something, 10 raised to -5. So the answer is 2.7 into 10 raised to -5. D is the answer here. D is the answer here. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. So that was question number 81. Question number 82 हो चुका है, 83 हो चुका है, 84, 85 हो चुका है, question number 86. Therefore question number 86. And that's a star problem. That's a star problem. Question number 86. चलिए, क्या दिया है यहाँ पे? Will they say क्या दिया? A metal cylinder of length L is subjected to a uniform compressive force. Is subjected to uniform compressive force F as shown in the figure. The material of the cylinder has Young's modulus Y, Poisson's ratio sigma. The change in the volume of the cylinder delta V पूछो. Length L, metal cylinder, material, Poisson's ratio is sigma. Now देखिए यहाँ पे volume of the cylinder is, it's a cylinder basically. The volume of the cylinder is given by pi r square into L, pi r square into L, और फिर इसका मुझे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए, नो आपको इधर याद होगा एक लेक्चर में, मतलब मेरे ख्याल से जो लेक्चर था ये वाला लेक्चर रहा होगा, जिसमें मैंने
डिफरेंशियल के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद होगा। आई हैड टॉक्ड अबाउट द डिफरेंशियल्स। या ये रहा डिफरेंशियल, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें मैं उसका डिफरेंशियल जो लिखा था वो डिफरेंशियल dv इज इक्वल टू दिस। ये डिफरेंशियल मैं वहां पे कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस डिफरेंशियल हियर। ये उसका डिफरेंशियल है। सो लेट मी जस्ट डिवाइड दिस dv अपॉन v इज इक्वल टू pi r square dl upon pi r square into l plus pi l 2r dr divided by pi r square into l. Now that will give me pi r square gets cancelled, dl upon l, okay, plus pi r l, pi r l. So this is 2 times dr upon r, isn't it? I'll call this as dv upon v. I'll call this as equation number 1. मुझे चाहिए भाई उसका पॉशंस रेशियो क्या होता है। पॉशंस रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन, लेकिन वो लैटरल स्ट्रेन माइनस होता है, अगर आपको याद होगा। ये जो डायग्राम, दिस वन, पॉशंस रेशियो इज माइनस होता है एक्चुअली। दिस इज पॉशंस रेशियो, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज माइनस सिग्मा। So what I'll say here, sigma is equal to minus lateral strain, that is dr upon r, divided by longitudinal strain dl upon l. So if I'll cross multiply, what is this going to give me? This will give me sigma times dl upon l is equal to, rather, minus dr upon r is equal to this, isn't it? Now यहाँ पर dr upon r I'll substitute from equation 2 in equation 1. जिसके लिए मैं substitute करूँगा dr upon r होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती से dr upon dr लिखा है। Okay, let me substitute this. So what am I going to get there? dv upon v is equal to dl upon l minus 2 sigma dl upon l. That means it's going to be d upon l into 1 minus 2 sigma. This is dv upon v, isn't it? अब मुझे सिग्मा, अब मुझे यंग्स मॉड्यूलस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट, इफ आई एम, या यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन द लेंथ है, सो दिस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. So what will be dl upon l is equal to dv upon v into 1 upon 1 minus 2 sigma. I'll call this as equation 3, or substituting from equation 3 over here. इसके लिए मुझे substitute करना पड़ेगा. So what am I going to write here? Therefore y is equal to force upon area उसका pi r square होगा, divided by dv upon v मतलब pi r square l into 1 upon 1 minus 2 sigma. वेल इसमें से पाई आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है. सो दिस बिकम्स एफ एल इंटू 1 माइनस 2 sigma divided by dv, and therefore change in the volume dv is equal to fl into 1 minus 2 sigma divided by y, fl into 1 minus 2 sigma divided by y. So the answer is D. देखिए, and that's a star problem, या स्टार या हाफ स्टार बोल सकते हैं आप इसको. It's a kind of derivation actually. It's a kind of derivation. You can say it's a star or half star problem. I hope this is clear to you all. Right? Will I go for the next question? Question number 87. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
Question number 87. For the given material, Young's modulus is 2.4 times that of the modulus of rigidity. नहीं, yeah, substitute. बस question number 84. For the given material, Young's modulus is 2.4 times the modulus of rigidity. मतलब y is equal to 2.4 times eta. Its Poisson ratio is sigma is equal to. अब देखिए there are some formulae on page number 199. ये देखिए, I'm talking about this formulae. You have to remember all this formulae. You have to remember all this formulae. बहुत important formulae है, ठीक है? सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द फॉर्मूले. अब इसको तो याद रखना ही रखना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू यूज इट मेनी टाइम्स. जैसे कि यहाँ पे, लेट मी जस्ट पुट दिस फॉर्मूला इन द बॉक्स हियर. चलिए, अब इसमें से कोई एक फॉर्मूला मुझे चाहिए विच विल बी यूजिंग वाई ईटा एंड सिग्मा. तो वाई ईटा सिग्मा को यूज करने वाला एक फॉर्मूला जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसमें बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. दिस वन जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट. मुझे सिग्मा चाहिए. सो Young's modulus is 2.4 times eta. This is 2 times eta into 1 plus sigma. Eta gets cancelled. 2.4 upon 2 is 1.2 is equal to 1 plus sigma. Therefore, sigma is equal to 0.2. I mean, that's so simple if you know the formula. D is the answer. अगर फॉर्मूला पता है तो ये आप फॉर्मूले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. इट वॉज वेरी इजी. ओके, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 देखें, इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 89 नाउ, इसके बाद आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 89. ये रहा, क्या बोल रहे हो? द रिलेशन बिटवीन y eta and beta b, y eta and b, ये रहा, दिस इज द रिलेशन. तो स्टैंडर्ड रिलेशन मुझे पता होना जरूरी है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ पिकिंग द करेक्ट आंसर. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, इजंट इट? यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है. यू शुड नो द फॉर्मूले वेल. ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या दिया है यहाँ पे. Material has Poisson's ratio. Poisson's ratio is 0.5. As I told you, this is a star problem. The material has Poisson's ratio sigma is 0.5. 0.5 जब होता है, अगर आपको याद होता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 ये स्पेशल प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया था. इट्स स्पेशल केस. क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, यही है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें इस वायर को स्ट्रेच किया था. स्ट्रेच किया था मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था. वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर. और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया Poisson's ratio सिग्मा इज इक्वल टू -0.5. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज रिडक्शन इन द रेडियस. तो व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम द Poisson's ratio इज 0.5. इसी को उन्होंने रिवर्स करके पूछा है यहाँ पे. इसी को उन्होंने रिवर्स करके पूछा है यहाँ पे. Is that clear? So what is the percentage change in the volume? The percentage change in the volume is 0. There is no change in the volume. So D is the answer. Is this clear to you all? Is this okay? इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. That was question number 88 done. 89, 90.
Question number 90. A material, 90th question. A material has Poisson's ratio zero point 0.2. So sigma is zero point 0.2. If a uniform rod of its suffers longitudinal strain is change in length upon original length. It is 4 into 10 raised to minus 3. Calculate the percentage change in the volume. So they are asking what is dV upon V into 100. This is the percentage change in volume. Okay, dV upon V into 100. We want to find out this. How's that? कैसे करेंगे? Now as you know that sigma is equal to zero point 0.2, but that is equal to dr upon r, lateral strain upon longitudinal strain. Dr lateral strain upon longitudinal strain, isn't it? Yes. So we know that ये actually minus होता है यहाँ पे हमेशा. So I would say that dr upon r is equal to minus zero point 0.2 into 4 into 10 raised to minus 3. That is equal to minus zero point 0.8 into 10 raised to minus 3. This is dr upon r, isn't it? And this is dl upon l. Is that clear? ठीक है. Now what will be the volume? Volume is equal to pi r square l. Pi r square l. So what will be dV? वही उसका volumetric strain. So I'll say this is pi uh, into 2r into l plus pi r square, pi into 2r into l into dl, and this is sorry pi into 2r into l into dr. वही चीज मैं यहाँ पे dr and this is dl. The same thing. I'm just writing down this thing. ये कहाँ गया था? ये this thing pi r square dl into this. यही the same thing I wrote here, pi r square into dl. So this is the differential जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था. Now I'll divide this. So this will become dv upon v is equal to, I'll write this as pi into l into 2 r dr plus pi r square into dl, and divide this by pi r square into l. Divide this by pi r square into l. This gets cancelled. यहाँ पर भी pi r l cancel, pi r l cancel. So what you get there is dv upon v is equal to 2 times dr upon r plus dl upon l. But as I know that dr upon r is this, so let me substitute here. This is 2 times minus 0.8 into 10 raised to minus 3 plus dl upon l is 4 into 10 raised to minus. So इसमें से 10 raised to minus 3 will come out common. This will become minus 1.6 plus 4, and that will give me what? 4 में से 1.6 गया. 2.4 into 10 raised to minus 3. This is dv upon v. परसेंटेज चाहिए अगर मुझे तो this will become dv upon v into 100 is equal to 2.4 into 10 raised to minus 3 into 100. Now that is equal to 2.4 into 10 raised to minus 1%, 0.24%. The answer is 0.24%. So C is the answer. इसे भी मैं स्टार या हाफ स्टार ही बोल दूंगा. C is the answer here. I hope this is
क्लियर टू ऑल? नो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसी टाइप के हैं, उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है ये सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 92 सेम टाइप के हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन यंग्स मॉड्यूलस। चलिए, क्या दिया है जी यहाँ पे? वन एंड ऑफ अ नाइलॉन रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 6 मिलीमीटर, मतलब रेडियस 3 मिलीमीटर, is fixed to free limb a monkey weighing 100 newton. Wow, weight of the monkey is 100 newton. Jumps to catch the free end and stays there. Find the elongation of the rope. मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम, आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रोप। ठीक है, नहीं फ्री बॉडी डायग्राम में उसका कोई जरूरत नहीं। दिस इज द फोर्स अप्लाई। अगर ये रोप है, यहाँ पे मंकी है, तो वी से दैट देयर विल बी सम elongation. Young's modulus is equal to FL upon AL, isn't it? They are asking what is the find the elongation of the rope. Delta L पूछा है, LL small l is asked there. कोई नहीं, बहुत सिंपल है। तो small l is equal to FL upon AY. Force is 100 Newton. Length of the rope is 4 meter. Area, well, area is equal to pi r square. This is pi into r square. 3 3 is 9, 10 raised to minus 3 minus 3 minus 6 meter square. So this will become 3.14 into 9 into 10 raised to minus 6 into Young's modulus is 4.8 into 10 raised to 11. कुल मिलाकर क्या होगा देखिए अभी गौर से। This will be like 100 into 4 upon 3.14 into 9 into 4.8. नहीं, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 raised to क्या 11 minus 5, दिस इज माइनस 5। तो मुझे बाकी जो है डेटा उन्होंने जो दिया है वो जो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये डेटा सिग्मा का वैल्यू खामखा दिया हुआ है जस्ट टू कंफ्यूज। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। 4 1 का दिस इज 1.2, ये इसको 12 बना देंगे और यहाँ पर एवरेज 0 अटैच हो जाएगा। तो इसमें हम 4 3 12 इंटू 250 बनेगा ये। और कुछ देखिए कर सकते हैं क्या? I'll write this as 250 into 10 raised to minus 5. डिनोमिनेटर में क्या क्या होगा देखिए, 3.14, 9 और 3। I'll approximate this to 3 only. ठीक है, तो 3 और 3 9 हो जाएंगे। 9 1 जा 9 18, 5 to 7 70 हो जाएगा। Approximately 8 जा 72, 9 1 जा 9 3 जा पॉइंट 1 बचा, 9 1 जा 1 बचा, 3.11. So the change in the length will be 3.11 into 10 raised to minus 5 meter, or it will be like 0.311 into 10 raised to minus 6 meter, or it is 0.311 micrometer, microns, 0.3 micrometer. So A is the answer there. I hope this is clear to you. Hello.
कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशंस विद लिटिल बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. इन द क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट विल बी द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द रोप. हाँ, अब यहाँ पर अपने को पॉइसन रेशियो की जरूरत पड़ेगी. चेंज इन द डायमीटर ऑफ द रोप. तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी डी अपॉन डी. रेडियस लीजिए या डायमीटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स ओके. तो दिस विल बिकम डी डी अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा. माइनस आप निग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द reduction in the size. dl upon l. So change in the diameter is equal to sigma d dl upon l. चलिए सब्स्टिट्यूट करिए. So change in the diameter is equal to sigma. sigma यहाँ पे दिया हुआ है. sigma is कितना 1.2. this is 0.2 into diameter is given to be 6 millimeter. तो उसको मैं 6 into 10 raised to minus 3. चेंज इन द लेंथ जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 0.3 माइक्रॉन्स. 0.3 into 10 raised to minus 6 upon original length. Original length of the wire is 4 meter. चलिए divided by 4. This is 2 za 2 3 za 2 1 za 0.2 0.1. So that is equal to 3 into 3. 3 3 za 9. So that will become 0.9 into 10 के पावर्स देखिए क्या होंगे. -6 -3 -9 -1 -10 -10. और या आई थिंक दिस बेटर. और आई राइट इट एज, ये अगर इस तरफ गया तो 10 का पावर और एक बार माइनस हो जाएगा. इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस. 0.992 कुछ गड़बड़ करेगा. 6 तो हो गया सही है. 0.3 माइक्रॉन्स सही है. 4 मीटर. -11 आ गया यार. -10 क्यों आएगा. 4.5 मीटर दिया है. 4.5 4.5 मीटर दिया. 5 मीटर दिया. अच्छा 4.5 मीटर. फिर भी क्या फर्क पड़ेगा उससे. मैंने शायद यहाँ पर भी 4 ही लिया था. उसी वजह से आंसर थोड़ा सा अलग आया. चलो कोई नहीं. 4 में 4.5 ही लेने के बाद क्या फर्क पड़ेगा. 10 का पावर की चेंज हो रहा है. दिस इज 10 -6 -9. सेकंड मुझे थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक कर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 33 माइक्रोमीटर. मैंने जो ऑप्शन दिए हैं, वेल यही अगर मैं नीचे भी यूज कर लूँ. लेट मी डू दिस कैलकुलेशंस वंस अगेन. sigma, what is the value of sigma here? Poisson's ratio 0.2. sigma is 0.2. diameter 6 into 10 raised to minus 3. change in the length, this is important. change in the length is 33 into 10 raised to minus 6. ये important. divided by length, it's 4.5. well, I'll say this is a 3 1 3 1 15 4. Now this is 11 to the 4 to the 8.8. 11 into 0.8. 88.8.
इंटू 10 का पावर देखिए क्या आएगा, -9। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। दिस इज ए, ये सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी सिर्फ 8 क्वेश्चन रह गए, तो हम इसको खत्म ही कर दे। 8 भी नहीं, उसमें से मैं 2-4 ही सॉल्व करने वाला हूँ एक्चुअली, तो लेट मी सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 93, दैट्स a star problem. Question number 93 is a star problem. Shall I solve this? एक 4-5 क्वेश्चन और मुझे सॉल्व करने हैं, तो कैन आई कंटिन्यू? आई एम आस्किंग यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, इट्स अ स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ये रहा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Assuming that shear stress at the base of the mountain is equal to, भाई वहां पे माउंटेन दिखाया गया है, पता नहीं माउंटेन है तो मैं उस माउंटेन को अब ऐसा कंसीडर करूंगा। माउंटेन एज्यूम करते हैं ऐसा माउंटेन, ठीक है। Assuming that the shear stress at the base of the mountain is equal to force per unit area due to its weight, मतलब इसका वेट है W, तो यहाँ का जो है shear stress is equal to force upon area, that is weight upon area। अब माउंटेन को मैं एक ब्लॉक की तरह ले लूंगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ द माउंटेन on the earth if breaking stress of a typical rock, breaking stress, we call this as a breaking stress for the rock, is 3 into 10 raised to 8 Newton per meter square, and density of the rock is 3 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Take G is equal to 10 meter per second square. अब देखिए breaking stress is this. Now what is the weight of the mountain? W is equal to mg. Now what is mass? Density is equal to mass upon volume, and therefore mass is equal to rho into volume into g। बट अगर इसका हाइट h है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, so this will become weight is equal to rho into area into length into g, ऐसा रहेगा। now let me just substitute here, तो स्ट्रेस जो होगा वही ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, दिस इज 3 into 10 raised to 8, W is equal to rho A L G upon A, area gets cancelled, so what is the length is equal to, it is 3 into 10 raised to 8 divided by rho into G, rho L, rho into G, rho is 3 into 10 raised to 3 and G is 10, 3 gets cancelled, so what is this, 10 raised to 4, 8 minus 4 is 10 raised to 4, that is equal to 10,000 मीटर। दिस इज द लेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है उसका हाइट हो सकता है, सो 10,000 मीटर इज एक्चुअली 10 किलोमीटर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ द माउंटेन? मैक्सिमम हाइट इज C। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस वाज अ स्टार प्रॉब्लम। समझ में आ गया? हेलो हेलो, अगला क्वेश्चन, इज दिस क्लियर टू ऑल? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। With what minimum acceleration, can a fireman slide down the rope? देखिए ये रोप है, यहाँ से वो फायरमैन है वो नीचे आ रहा है, मुझे उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, आई विल हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो ऊपर होगा टेंशन विच इज ओके, और नीचे है उसका वेट, इस वेट इज एक्टिंग ऑन जी, एंड वो जो फायरमैन है he slides down. So what is the direction of the motion? This is the direction of motion. Motion is in this direction. बराबर है क्या? So what will be F is equal to ma. यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, that force F is equal to ma, and that is equal to the difference of these two. मतलब T, हमें अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम की कॉन्सेप्ट याद है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू T minus mg. Is this clear? T minus mg. अब उसका मुझे और उन्होंने क्या किया है, whose breaking strength of this rope, what is the maximum tension it can have, is 2/3 of his weight. So we know that T is equal to 2 by 3 times mg. तो बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें. So this is m into a is equal to 2 by 3 times mg minus mg. बराबर है क्या? mg minus, सॉरी उल्टा हो गया रे ये, हो गया mg माइनस, ये जीत रहा है ना फोर्स, ये ज्यादा होगा ये कम होगा. वन सेकंड, मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, दिस हैज टू बी उल्टा, दिस हैज टू बी उल्टा, like mg minus t, and this will be mg minus 2 by 3 times mg. M gets cancelled throughout, so a is equal to g minus 2/3 of g, that is 1/3 of g. That's the answer. So with what minimum acceleration he can travel, it is t by 3, g by 3. So D is the answer. Did you understand? यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम देखा है कि भाई ये mg है और वो फायरमैन नीचे की तरफ जाएगा. So what this force is going to have, F is equal to ma. So it will be mg minus t is equal to ma. समझ में आ गई बात? हेलो, न्यूटन्स लॉज में हमने ये देखा था, अगर आपको याद है. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I'll go for the next question. That is question number 95 and same time 98 also. 95 और 98 they are of the same time. Question number 95. 98, 95. 95 और 98 they are of the same type. क्या दिया है यहाँ पे? A beam, हाँ ये जो है, इस डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे आपको देना पड़ेगा. I have to give you the direct formula. क्या है कि देखिए यहाँ पे एक, समझोगे, this is a beam. Hmm? This is a beam. This beam is supported at both the ends like this. These are the two supports at the ends. And this beam is acted upon by some force. Some force is acting there on this. कितना force है? W. W is the force acting there. Other terminologies क्या है? L is the length of the beam. Beam का जो length है वो कितना है? L. L is the length. ठीक है?
B is the breadth of this beam, and D is the depth of this beam. So what is likely to happen because of this load? ये जो beam है, this is going to bend a bit. ये थोड़ा bend हो जाएगा ऐसा. This is going to bend. कहाँ bend होगा? The maximum bend which is going to take place is over here. ये कितना होता है? This bend is called as delta. मतलब उसका जो है ना, ये दोनों जो bend होगा, that is given by delta. And the formula for delta is the ready-made formula for delta. अब यहाँ पर जो weight है उसको मैं mg बोलूँगा. So I would say this is W L cube upon 4 BD cube into y. Where y is the Young's modulus. ये formula हम directly assume करेंगे. We'll assume this formula. This is called as a sag of the beam. Bending या इसको sag भी कहते हैं. Sag of the beam. It sags there. Delta is equal to WL cube upon 4 BD cube y. ठीक है? WL cube upon 4 BD cube y. So delta इसको आप डिप्रेशन भी बोल सकते हो कई बार. This is also called as depression, sag, or it is also called as bend. Bend कितना bend हो गया वो. So the depression of the center is proportional to ये रहा. Its delta is inversely proportional to y. Young's modulus. इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 98 आल्सो. ये डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे. यही फॉर्मूला पूछा है उन्होंने इसमें भी. क्वेश्चन नंबर 98. A bar of length L, breadth B, depth G is supported at its ends and is loaded at the center by load W. If y is a Young's modulus, the depression of the center is given by WL cube upon 4BD cube y. A is the answer. Is that okay? It's a direct formula that you have to know. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I'll go for the next question. That is question number 96. Question number 96. देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. Two strips of the metal are riveted together. Rivet मतलब उसको join किया गया है. Together at the ends by 4 rivets. Two metal strips. ये देखिए यहाँ पे. ये ऐसे दो strips है metal के. They are joined together, riveted together by means of 1 2 3 और 4. 4 rivet से उसको join किया गया है. Each of diameter 6 millimeter. Diameter of each rivet is 6 millimeter. Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load.
ठीक है, 1/4 ऑफ द लोड। अब देखिए इसको इसके इस तरफ खींचा गया है और ये जो है उसको इस तरफ खींचा गया है, तो यहाँ पर शेयरिंग होगा इस हर एक का, each of these will have the sharing over there। शेयरिंग जो होगा तो उसके लिए the maximum tension that can be exerted on the riveted strip। तो अगर ये फोर्स F है या फिर ये टेंशन अगर मैक्स है, T मैक्स है, तो दिस T मैक्स यहाँ पर जो अकेला जो रिवेट होगा, हर एक रिवेट जो होगा उसको shear ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। So what is the force? It is equal to T/4। That is the maximum tension का 1/4 है। They will share this load, isn't it? And shearing stress जो दिया है वो भी दिया है, यहाँ पर एरिया भी दिया है। तो what will be eta is equal to F upon A। सॉरी eta नहीं है, एक्चुअली दिस इज shear stress ही दिया है डायरेक्टली। सो दिस इज shear stress, shear stress। So I'll say shear stress is 6.9 into 10 raised to 7 into area is pi/4 d square। That will be 36 into 10 raised to minus 3 का square is minus 6 is equal to F, that is T/4। 4 gets cancelled, so what is T is equal to, direct final answer मिल जाएगा यहाँ पर 6.9 into pi, that is 3.14 into 36 into 10 raised to 1, that is equal to 6.9। I'll approximate this to, इसको मैं approximate करूँगा 7 और इसको लिखूँगा 22/7 into 36, ठीक है, into 10। 7 gets cancelled, 22 से 32 से 13, 22 3 66 66 69 79। So this is Newton, that is equal to 7.92 Newton। 7.9 into 10 raised to 3 Newton। That's the answer. C is the answer here। I hope this is clear to you all. Okay. And question number 99. That is the last question which I am going to solve। Question number 99 इसका या क्या दिया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे इसके बारे में आपको बताना है। टू रॉड्स, रेडीमेड फॉर्मूला, two rods A and B of the same material and length, A and B, they are of the same material, same length, having radii R1 and R2, their lengths are same, L and L, and they are rigidly fixed at one end and twisted by the twisted मतलब जो इरेजर को ऐसा पकड़ के अगर हम ऐसा घुमाते हैं तो उसको ट्विस्ट बोलते हैं। The twisted by the same torque applied at the, so torque is also same, torque, the ratio of angle of the twist। now यहाँ पे standard formula, the ratio of angle of twist, theta is equal to F upon, देखिए अगर ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये रोटेशनल मोशन हम कंसिडर कर सकते हैं, और लीनियर मोशन के लिए अगर हम इसी को देखते हैं, लीनियर मोशन के लिए, तो यहाँ पर व्हाट डू यू से, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, एंगल ऑफ ट्विस्ट की अगर बाद में करूँगा कि अगर ये रॉड है उसकी लंबाई, अगर इसको हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट एक्सटेंडेड। यही रॉड है, अगर इस रॉड को अगर ऐसा हम घुमाएंगे तो देयर विल बी द टॉर्क एक्टिंग ओवर देयर, ठीक है।
लीनियर के लिए हमारा होगा यंग्स मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, ये होगा, इजंट इट? इस तरह से कुछ होगा, एंड इट्स angular the change in the length is fl upon ay. इसी तरह से इसको घुमाएंगे तो देयर विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज इक्वल टू फोर्स के जगह पर टॉर्क आएगा, लेंथ के जगह पर लेंथ ही आएगा, एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्विस्ट, जो कि मैं, नहीं यार इसको मुझे आपको डायरेक्ट फार्मूला ही देना पड़ेगा, दिस इज 2 tau l अपॉन पाई r रेज टू 4 इंटू ईटा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, पाई r रेज टू 4 इंटू ईटा, you have to accept this without proof. मैं उसको कनेक्शन चेक करा रहा, बट मतलब देयर इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दीज टू, लेकिन नहीं, इट्स बेटर वी रिमेंबर द फार्मूला लाइक दैट. और मुझे चाहिए एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ एंड ए एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ एंड बी, तो अगर मैं थीटा ए अपॉन थीटा बी लिखता हूँ, तो देखिए इसमें दे आर अप्लाइड विद द सेम टॉर्क, तो टॉर्क तो नहीं आएगा इसमें, सेम लेंथ वो भी नहीं आएगा, 2 और पाई इज अ कांस्टेंट, रेडिया r1 एंड r2 and eta 1 and eta 2, they are made of the same material, तो eta भी same आएगा. So this is 1 upon r1 raised to 4 divided by 1 upon r2 raised to 4, which is actually r2 raised to 4 upon r1 raised to 4, and therefore C is the answer there. Is this clear to you all? Any doubts about D is the answer? Well, that's it for the chapter. We'll stop here today. Tomorrow we'll continue. ये chapter खत्म हो जाता है यहाँ पे. Okay, we'll stop here.